साखरपेठ येथील विणकर बागेत पद्मशाली समाजातून कठीण समजल्या जाणाऱ्या सीए परीक्षेत उज्ज्वल यश मिळवलेल्या गुणवंतांचा सन्मान करण्यात आला। सदर सत्कार समारंभ हरिओम विणकर बाग व बौद्धिस्ट संस्था सोलापूर यांच्या वतीने संपन्न झाला। यावेळी शुभम व्यंकटेश चन्ना, निखिल शिरीष चिलका, अक्षय श्रीनिवास पिस्के, श्वेता व्यंकटेश सिद्राल, रचिता रवींद्र माठेटी, अनुजा अंबादास गोली या यशस्वी विद्यार्थ्यांचा शाल, बुके व भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी मान्यवर व यशस्वी विद्यार्थ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। सर्वप्रथम इथे उपस्थित असलेल्या सगळ्या मान्यवरांना माझा नमस्कार। हरिओम विणकर बाग बहुउद्देशीय संस्था आणि इथले असलेल्या सगळ्या मान्यवरांना माझा मनपूर्वक आभार। तुम्ही माझा आभार। उपस्थित आहात त्यासाठी आभार। जसं चिलका सीएनी म्हटलंय की सीए परीक्षा ही अवघड नाही आहे। अवघड तर खूप परीक्षा असतात, पण सीए परीक्षेत कष्ट केलेले सगळे पास होतात। जो कष्ट करत नाही त्यालाच प्रॉब्लेम येतोय। खूप म्हणजे लेक्चर्स वगैरे अवेलेबल नसायचे। आता आमचं कसं झालं आहे, पूर्ण लेक्चर्स वगैरे आम्हाला अवेलेबल असतात आणि सगळं मिळतं आहे आम्हाला। म्हणून असं कसं झालं की आता येत्या वर्षी खूप जण आता उत्तीर्ण करत आहेत, म्हणजे पास करत आहेत एक्झाम। त्यामुळे मी सांगणं इच्छितो की कोणताही एक्झाम असं टफ नसतो की आपण क्लिअर करू शकत नाही। आपण जर जिद्द ठेवली आणि चिकाटी ठेवली, कोणताही एक्झाम आपण क्लिअर करू शकतो। आज आम्हाला इथं बोलवून आमचं फेलिसिटेशन करण्यासाठी आणि सीए जर्नीबद्दल सांगायचं म्हटलं तर अवघड तर प्रत्येक कोर्सच आहे, प्रत्येक परीक्षा आहे, पण ह्यात अशी वेगळी हे आहे की आपल्याला पेशन्स आणि कन्सिस्टन्सी ठेवावं लागतं। कारण एकदा पेशन्स लूज झालो, एकदा स्वतःवर विश्वास लूज केलो तर पुन्हा आपण ती परीक्षा देऊ शकत नाही। तर ते एक महत्त्वाचं आहे की स्वतःवर विश्वास असायला पाहिजे की आपण कुठलीही गोष्ट करू शकतो। आणि फेल्युअर तर भरपूर येते, आपण भरपूर एक्झाम्पल्स बघितले की कुठला पण बिझनेस असू दे, कुठली पण परीक्षा असू दे, पहिल्यांदा वन गोमध्ये निघणं हे खूप अवघड आहे। आणि कुठलं पण बिझनेस पहिल्यांदा सेटअप केल्यावर लगेच प्रॉफिट होत आहे हे पण खूप अवघड आहे। लॉसेस होतात आधी, एक खूप वर्ष 2-3 वर्ष लॉसेस होतात, नंतर मग कुठं प्रॉफिट व्हायला चालू होतं। तर ही पण परीक्षा तशीच आहे की पहिल्यांदा तुम्हाला हार्डवर्क करावं लागेल। हार्डवर्कसोबत स्वतःवर बिलीव्ह करणं, पेशन्स ठेवणं, कन्सिस्टन्सीने रोज उठून अभ्यास करणं। आणि एक दिवस असं असतं की हां बाबा एक दिवस माझं 10% आउटपुट निघेल, पण दुसऱ्या दिवशी उठून परत आपण 110% द्यायचं। हे जी कन्सिस्टन्सी आणि स्वतःवरचं जे प्रयत्न आहेत ते चालू ठेवायला पाहिजे। आणि आजकाल सोर्सेस तर भरपूर अवेलेबल आहेत। इंटरनेटमुळं आपल्याकडं एवढे सगळे वेबसाईट्स आहेत, लेक्चर्स अवेलेबल आहेत, आधी तसे नसायचे, आता सगळे अवेलेबल आहेत। तर करण्यात तर काही हे नाही आहे, स्वतःवर आपण जर विश्वास ठेवून केलं तर काहीही सिद्ध होऊ शकतं। हे स्वतःवर आपण विश्वास ठेवून करायला पाहिजे असंच मला वाटतं। पण అన్నిట్లకంటే అవగడ్ పర్యాయ సిఏది అని అంటారు। ఇయాల పూర్వభాగ లోపట ఇదివరకు దగ్గర ఒకటి అందరి లోపల ఒక సమజ్ ఉండే పూర్వభాగ అంటే ఇప్పుడు అక్కడ పశ్చిమ అంటే నవిపేట అక్కడ సైడ్ నుంచి వ్యాపారులు అక్కడ ఉంటారు, కార్ఖానదారులు ఇక్కడ ఉంటారు। కార్ఖానదారుల పిల్లలు జాస్తి మునిం కార్ఖాన సంభాళించేది గంత చేసి అంటే శనాయ్ ముంగడిది పిడి నా కార్ఖానా సంభాళాలే నా ఉన్న రూమ్లో 12 రూమ్లో 24 చేసా అంటే శనాయ్ అన్నలాగా పద్ధతి ఆడున్న దాని లోపల ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి ఈడ ఎండి స్పేస్ సైంటిస్ట్ आणि मला IT सेक्शन IT क्षेत्र లోపల ఇయాల పుణె లోపల జవळपास शेकडोनी నాకంటే హజారోని పిల్లలు మనోళ్ళాడు ఉన్నారు। దాని లోపల CA అనేది అన్నిట్లకంటే అవగడ్ సెక్షన్। దాని లోపల పిల్లలు సంఖ్య दिवसेंदिवस వాళ్ళ IQ లెవెల్ వాడాయిచి కసి వాళ్ళు కష్టం చేసి ఇయాల CA అసొంటి దాంట్లో పడి మన పూర్వభాగ లోపల ప్రస్థాపిత అవుతారు। దానిబద్దల క్షణ వాళ్ళ కౌతుక్ చేసేది అంత తక్కువ ఉన్నది మన పిల్లలది। మీరు మాది అంటే మాకు క్షణ అభిमान అది మీ బద్దల। धन्यवाद। या सत्काराबद्दल विद्यार्थ्यांनी संस्थेचे आभार मानले।